Hello everyone, welcome back to this Materia Medica series, and today I'll be sharing about my viewpoints on Aurum Metallicum, and I'll be sharing some of the key points for Aurum Self and Aurum Iode also. So Aurum Metallicum. So what is Aurum? Aurum is a metal which we call as gold. हम general language में बोलते हैं उसको gold. So gold अगर आप देखेंगे so we will consider कि gold, when we use gold in Indian society we use gold, हम उसको एक एक authority की तरह रखते हैं घर पे कि when there will be some cash problem, some cash issues will be there, at that time we will use the gold. ठीक है, we have heard this so much times in our from our ancestors कि gold is like कि वो एक investment हो जाता है, long term investment. So similarly people are also like that. So basically they are always there in the hard times. Aurums are the most graceful people you can get. They are unemotionally so much duty bounded that they can be fitted everywhere in the society. So उनका एक core है unemotionally duty bounded people. So there are three cores: unemotional, duty bounded, very conscientious. This is the strength and the rigidity of the Aurum. They do all the work with all their conscience. कि उनको अगर वी टेल एज कि एक मदर होती है और एक मेड होती है, तो मदर के साथ क्या होता है ना, दे शी विल डू ऑल द थिंग्स फॉर हर चाइल्ड, फॉर देयर किड्स, एवरीथिंग सब, बट उसके साथ एक इमोशनल टच रहता है. बट ऑरम्स आर लाइक मेड, जो बच्चे का तो ध्यान रखेंगे बट देयर विल बी नो इमोशनल टच. वो अपने बच्चे के लिए खाना बनाएंगी, उसको सब एक्टिविटीज कर देंगे ऑन टाइम, बट there will be no emotional touch for them. So all in all, if you will see aurums, so aurum metallicum are very the metallic qualities ही different होती हैं. metals कैसे रहते हैं? They are very rigid, they are very graceful, they do not change their mind so easily, and also they are found very rarely in the sand. तो इतनी easily gold available नहीं होता. So similarly people are also very rare, unemotional, very duty bounded. So ये होते हैं ऑरम. अब मैंने आपको बोला था मैं ऑरम आयोड और ऑरम सल्फ के बारे में भी थोड़ा बहुत बताऊंगी. सो ऑरम्स की क्वालिटी के साथ अगर सल्फर की क्वालिटी मिक्स हो जाए, जैसे क्रिएटिविटी ऑफ सल्फर, फिलोसफिकल ऑफ सल्फर, देन दे बिकम ऑरम सल्फ. एंड फॉर ऑरम आयोड्स इफ विल टॉक, सो देयर विल बी हाइपर एक्टिविटी एंड द लीन थिन ऑफ आयोड्स. सो ऑरम आयोड्स एंड सल्फर को भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर आपको ऑरम जैसी क्वालिटीज मिलने लग जाए. द बेसिक कोर ऑफ ऑरम इज ड्यूटी बाउंडेडनेस without any emotions. If you want to know more about this, you can join our module sessions also, and you can buy our books. And there is now one more addition to the predictive homeopathy, and that is e-university. You can join and get the details from the inbox below. Thank you. Thanks for watching. Like, share and subscribe.